Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बा रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज विषय रे पढिबा। देखो आमे जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन विषय प्रथम देखिला से आमे एक्स वाई आउ जेड कोऑर्डिनेट ता सहित टाइम टी कोऑर्डिनेट एई चारिटा को ट्रांसफॉर्म करि पारला when the two frames are in relative motion with each other। आ जदि ए रिलेटिव मोशन टा जे कोनसी गोटी एक्सिस सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन रे होउची ताले y आउ z कोऑर्डिनेट रो ट्रांसफॉर्मेशन टा अनचेंज्ड हबो। ओके, देयर विल बी नो change in y and z coordinate, only the change occurs in the x coordinate and the time coordinate। so ei jo lorentz transformation ru ame puni akku velocity transformation pai pariba। ओके, किपरि गोटे वेलोसिटी को आमे ट्रांसफॉर्म करि परिबा फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर व्हेन दे आर in relative motion with respect to each other। ओके, सो एई जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रो फार्मूला को जो आमे पाइबा रिलेटिविस्टिक फार्मूला बा एडिशन ऑफ वेलोसिटीज याकू आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोली की कहा जाए। सो एथि पय मध्ये सेई बळिया आमे दुईटा इनर्शियल फ्रेम्स कंसीडर करिबा, गोटे s आ गोटे s dash such that both are in relative motion, or you can say s dash is moving with a uniform velocity, suppose v, okay, and it is moving at right along the positive x-axis relative to s। now suppose u and u dash be the velocities of a particle। गोटे पार्टिकल नबा जार वेलोसिटी होची u आउ u dash respectively when it is measured in the inertial frame s and s dash respectively। then now ei जो दुईटा वेलोसिटी को आमे in terms of rectangular components लिखि परिबा। सपोज ux uy uz हे गला u रो components, similarly ux dash uy dash uz dash ये गला components of u dash। ताले आमे जानिछु velocity is the rate of change of displacement or speed is the rate of change of distance। so ux हे गला dx by dt, uy dy by dt, uz dz by dt, and similarly ux dash uy dash uz dash ए भलिया आसीबो। एबे लगेबा हमें जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रू हमें एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट एई दुईटा को ही मेन फोकस करबा बिकॉज एठी मूविंग फ्रेम टा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करची, सो y और z कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहिबो। ओके, सो एठी देखो x डैश यार वैल्यू दिस मच आस्तला एंड t डैश यार वैल्यू एतिकी आस्तला। ओके, सो हमें एबे याकू कोन करबा डिफरेंशियल नेबा बिकॉज हमरो एम हैला केमती वेलोसिटी बाहर करिबा जो कंपोनेंट अछि। सो dx डैश बाय dt डैश बाहर करिबार हमको अछि। सो फर्स्ट dx डैश कला। ओके, सो अकॉर्डिंगली एठी डिफरेंशिएट करिबा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट अछि ता ऊपर डिफरेंशिएशन एग्जीक्यूट हेबोनी। देन dy डैश dz डैश एज इट इज हेबो आउ dt डैश दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। ताले एबे dx डैश बाय dt डैश आमे बाहर करि परिबा व्हिच इज योर ux डैश। सो एठी देखो तळे आउ ऊपरे एठी डिनोमिनेटर रे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर एटा कैंसिल हो जिवो जेतळे एठी पुट करिवो। ओके, सो केवल दुईटा जाको टर्म रो न्यूमरेटर रहिबो। ओके, ठीक अछि। सो याकू टिके हमे सजै की लिखि दे परिबा ए हिसाब रे, सो दैट फाइनल वैल्यू हमरो आसिला ux डैश इज फाउंड आउट टू बी ux minus v divided by 1 minus v by c square into ux। एबे सिमिलरली
डी वाई डैश बाय डी टी डैश करिपरिबा। तेबे गोटे जिनिस बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस जे जदिओ वाई डैश इक्वल टू वाई आसिला सिमिलरली डी वाई डैश इक्वल टू डी वाई आसिला किंतु जेतेबेले आमे ई रेशियो बाहर करिबा डी वाई डैश बाय डी टी डैश व्हिच इज नथिंग बट योर यू वाई डैश और सिमिलरली आपको देखिबा डी जेड डैश बाय डी टी डैश व्हिच इज यू जेड डैश ताले सेटा यू वाई सहित समान हेबो नाही। ओके सिमिलरली यू जेड डैश विल नॉट बी इक्वल टू यू जेड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ओके सो देखो अकॉर्डिंगली डी वाई डैश बाय डी टी डैश जो वैल्यू आम पाई ताकू पुट करवा मन रख डी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई एटा तो पुट करदेला डी टी डैश रही भैल्यूटा ता सहित डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर थिला जोटा आम ऊपर को नहीं गला। ओके सो यार फाइनल वैल्यू केते आसिला देखो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। सो क्लीयरली इक्वेशन 2 रु जना पड़ुची जे यू वाई डैश इज नॉट इक्वल टू यू वाई एंड सिमिलरली डी जेड डैश बाय डी टी डैश भी जदि आम यही हिसाब से बाहर करवा ताले देख व्हिच इज योर यू जेड डैश इट्स वैल्यू विल बी लाइक दिस। ओके सो आम तीनटा इक्वेशन पाइला यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश यही तीनटा इक्वेशन को देखिबा जदि दे आर रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ओके जदि यार इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आम बाहर करवा ताले देख ये आम कौन करवा आम पुट करवा v इक्वल टू माइनस v इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन माने एबे फ्रेम एस डैश रु आम देखा फ्रेम एस रे जदि पार्टिकलटा अच्छी राइट सो u x dash will be equal to u x, u y dash will be equal to u y and u z dash equal to u z। एटा कौन एटा आमे रिप्लेसमेंट कला ओके v जगह माइनस v लिखा जोटा डैश थिला u x dash जगह u x लिखा u x जगह u x dash लिखा सिमिलरली u y dash जगह u y लिखा u z dash जगह u z लिखा जो ऊपर आम इक्वेशन 1 2 3 पाइला ताले रेस्पेक्टिवली आमर देखो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आसीगला यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू यू एक्स डैश सिमिलरली यू वाई इक्वल टू दिस मच एंड यू जेड इक्वल टू दिस मच। ओके सो ऊपर जो आम पाइला इक्वेशन 4 5 एंड 6 एटा हला इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर योर वेलोसिटी। ओके now जदि गोटे स्पेशल केस देखा इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज along x एक्सिस ओके जदि पार्टिकलटा x एक्सिस सीधारे मूव करछि ताले यार किछि भी आउ कंपोनेंट y आउ z डायरेक्शन रहिबोनी सो u y विल बी 0 and u z will also be 0 and this u x let us say it is u ताले आमे याकू लिखि देला u x dash equal to this much u minus v by 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर इंटू यू और ये जो u x डैश को सिंपली u डैश जदि आम लिखुचु देन u डैश इक्वल टू u माइनस v बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर इंटू यू। ओके अच्छा जदि आम यार उल्टा करवा इनवर्स बाहर करवा देन कन्वर्सली u इक्वल टू u डैश प्लस v बाय 1 प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू u डैश। ओके सो यही जो ऊपर आम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रो इक्वेशन गुड़ा बाहर कला से किछिटा कॉन्सिक्वेंसेस आम देखिपर ये देख फास्ट कॉन्सिक्वेंस कहूँ नो पार्टिकल कैन हैव अ वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। ओके सपोज गोटे आम पार्टिकल कंसीडर करवा व्हिच इज मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके नाउ ये भाया पार्टिकल जोटा हूँ आम नहीं पारिबा लाइक योर फोटोन फोटोन आम जानिछु इट इज ए massless particle। okay light consists of massless particles known as photon this is the quanta of energy। okay so it is possible for a particle of zero rest mass like your photon to have a velocity equal to that of light as observed by the observer o ताले ए velocity u को आम इक्वल टू सी लिखि परिबा देन द वेलोसिटी ऑफ द सेम पार्टिकल जदि याकू ऑब्जर्वर ओ डैश देखिबो ताले u डैश रो जो वैल्यू आम पाई ये u जगह c पकईदेला। ओके सो c माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c। ओके ये
एक्चुअली v बाय सी स्क्वायर ही था ये u थिला u जगह c सो c आउ ये तले c स्क्वायर अच्छी सो कैनसल हो गला सो 1 माइनस v बाय c आसी सो या सॉल्व कले देखिबो u डैश रो वैल्यू मध्य c आसिला ओके दैट मीन्स the observer in the inertial frame S dash, that is the observer O dash, also finds the particle, that is your photon, moving with a velocity of light, that is c. Or in other words, it is not possible for a particle to move with a velocity faster than that of light. Okay, and this also shows that the Lorentz transformation equation are in accordance with the constancy of velocity of light. Okay, माने light रो जो velocity अच्छी that is a constant quantity c जार value 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, आ गोटे consequence जदि देखिबा the formula for non-relativistic velocities. Non-relativistic जदि हमें कहबा then in that case here the velocity will be very small as compared to the velocity of light c, so that uv by c square and v square by c square will be negligible, nearly equal to 0. So in such a case the square root 1 minus v square by c square and the term 1 minus uv by c square will be very nearly equal to 1 because this term will be nearly 0. Okay, so a case रे कौन होगा ux dash will be equal to ux minus v, uy dash equal to uy, uz dash equal to uz. Okay, जदि जो फ्रेम टा पॉजिटिव x डायरेक्शन रे मूव करूची. Okay, so ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें पाइला for non-relativistic case, this is similar to your classical Galilean velocity transformation equation in the non-relativistic or classical Newtonian mechanics. Okay, so এই ସବୁ consequence ଦେଖିଲା ପରେ finally let us see the conclusions that can be drawn. So first case रे आमे already एटा discuss कला जदि velocity very less than c then এই ସବୁ जो पावर अच्छी v by c रो ताको आमे नेग्लेक्ट कर देला सो एटा रिड्यूस करिगला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को जोटा क्लासिकल न्यूटोनियन मेकानिक्स. ओके, तापरे सेकंड पॉइंट रे कहूची in order that ux dash may be real तेणु ux आउ v must both be less than c. okay, जदि greater than c हेगला then ux dash will not be a real number. okay, तापरे जदि ux equal to c एटा भी डिस्कशन कला हम ऊपर consequence रे for the case of light or photon. এই photon particle ପାଇଁ ଆମେ ux dash ମଧ୍ୟ c ଆସିବ. okay, so ଏଠି କହୁଛି the velocity of light remains the same from whatever system it may be measured, and hence the velocity of light is an absolute constant, that is the constant c of velocity of light which is independent of the velocity of system of reference. okay, and it is nothing but the second postulate of the theory of relativity. तापर फोर्थ कंक्लूजन एबे देखबा सो एठी रिजल्टेंट जदि हमें बाहर करबा दुईटा वेलोसिटी रो each of which is less than c ताले the resultant will also be less than c. तो एथि पई सपोज हमें नेबा ux dash to be equal to c minus l और v equal to c minus m such that this l and m are greater than 0. okay, suppose it a constant quantity, positive quantity, right? Then using the inverse velocity addition theorem हमें ux रो वैल्यू एतिके पाइथिला. एबे ux dash आउ v रो जो वैल्यू हमें ऊपर नेइछु याकू पुट कर दबा आउ आकू सॉल्व करि जिबा जदी then we will find that ux will be like this. okay, now since l and m are greater than 0, they are positive quantity, so l m by c ये जो तळे टर्म टा अछि this will be greater than 0. okay, and the quantity 2c minus l plus m plus lm by c this will be greater than the numerator this much. okay, so ये जो denominator टा numerator ठारू बड़ हबो. okay, that means এই केस रे कोन हबो रेशियो जो तुम देखुछ एठी ए स्क्वायर ब्रैकेट रे अछि this ratio will be less than 1 because here the numerator is less than denominator. or जदि एटा less than 1 हला ता माने ux will be equal to c into
a quantity which is less than 1, or ux must be less than c. So this proves the above statement that the resultant velocity जोटा ए स्टेटमेंट कहूँ resultant velocity जदि दुईटा velocity particle आम ना जार valueटा less than c अच्छी, then the resultant will also be less than c. Okay, thank you.